है कि दैट बी, यहाँ पे ये जो फॉर्म में आप ये इस फॉर्म में है, तो ये जो फॉर्म ये क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एक यूनिट में भी हो सकता है, 2 कंपोनेंट में भी हो सकता है, 3 कंपोनेंट में भी हो सकता है। उसी तरह से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक फॉर्म में भी हो सकता है, 2 रिएक्टेंट भी हो सकता है, 3 रिएक्टेंट भी हो सकता है। तो जैसे ये कंपोनेंट ज़्यादा होगा तो इसको बढ़ाना पड़ेगा आपको। आया बात समझ में? और ये जो कंपोनेंट है, ये चीज़, ये वाला, इसी चीज़ को हम कितना लिखे थे, वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर दिए थे, क्योंकि व्हेन इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मल्टीप्लाई द वैल्यू। इसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? दैट इज 1.8 सॉरी 1.98 इंटू 10 पावर माइनस 3 किस चीज में, इन कैलोरी, इन कैलोरी। ये आर जो होगा इट इज इफ इट इज ऑट द जीरो, मतलब एट द इक्विलिब्रियम और एट द स्टैंडर्ड वैल्यू इट बिकम्स 0, दैट इज 273। बट जनरली इट इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ द 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको आप क्या करते हैं, 273 प्लस 25 दैट इज 298। अगर उससे ज़्यादा होगा, when the value is more concentration, मान लीजिए कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, 30 डिग्री से कुछ भी हो सकता है। when the temperature is changed then the value is changed, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। बट नॉर्मली इट इज कंसिडर्ड एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन द कंडीशन ऑफ कैलोरी। But when it is conditioned, the condition is based on the joule, then it is converted into the form of the joule. जूल में भी हम बतलाए थे, अगर ये जूल में है तो ये कितना हो जा रहा है, 8 पॉइंट समथिंग कुछ है इसका, हाँ 314, 8.314 जूल है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जूल में। When you calculated in the form of the joule, then you cannot convert this value, ये वैल्यू तब कन्वर्ट नहीं होगा, दैट डायरेक्टली एसोसिएटेड एट द फॉर्म ऑफ द केल्विन, तो उसको आप केल्विन में कैलकुलेट करें, ठीक है। तो नाउ इन दिस वे यू अप्लाई द ऑल द मतलब नॉलेज ड्यूरिंग द कैलकुलेशन एंड ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम। ऐसा थोड़े ही है कि इट इज नॉट पॉसिबल दैट कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं द सेम थिंग इज अपीयर इन योर ये एग्जामिनेशंस। इट मे बी, ऐसा हो सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। ऐसा थोड़ी कि हम जो पढ़ा रहे हैं एकदम सच वही आने जा रहा है आपके पास, ठीक है। तो दिस वन इज द कंपोनेंट। तो इसको जिस फॉर्म में आए, जैसे भी आए, आप उसको बनाइए, ठीक है। और वो जो आप देख रहे हैं वो सेम है। और इसी चीज को हम कन्वर्ट किस में कर दिए थे, एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए थे। और इस पूरे का वैल्यू हम क्या बता दिए थे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पूरे को हम बतला दिए थे 1364। That means if the question is asked, then you cannot go through the calculation of these factors. You directly use the 1364 if it is at the 25 degree centigrade or if the temperature is not mentioned. अगर टेम्परेचर नहीं भी मेंशन है तो भी वो 1364 कैलोरी पर ही बनेगा। अगर वो किलो कैलोरी दे रहा है तो आप यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, दैट इज द किलो कैलोरी। अगर जूल में आ रहा है तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 4 पॉइंट, कंप्लीट बोलिए 3 डिजिट तक, 4.13189, 4.189। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.189 कन्वर्टेड इनटू द जूल। एंड इफ इट इज एज द 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर वो बोल दे रहा है, जो कॉमनली 37 आस्क कर दिया जाता है, इसलिए कि इन द ह्यूमन बीइंग इट इज अपीयर्ड एट द 37 डिग्री। हम लोग का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कभी कभी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर खास करके इंजाइमेटिक काइनेटिक्स के टर्म में आता है तो उसको पूछ देता है। तो देन अगर ये 137 पे है तो ये कितना हो जाएगा, 1419। इट इज फॉर द सिंप्लीफिकेशन। ये आपको क्या बतलाया गया था, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है।
चेंज कर दियो ना questions for the clarification. I am just mentioning some questions for the clarification. ठीक है? In some questions the molar value is not represented. Molar value represent नहीं होगा. That represent the reactions and the value in front of any molecules represent the molar value. सीधा सा बात है. जैसे अभी हम बोले कि C6H12 वो 6 + 6 O2. तो 6 जो O के पहले वो क्या हो गया उसका मोलर वैल्यू. सिंपल आप इतना दिमाग में तो रख ही सकते हैं. उसके बाद बोल रहा है वो 6 CO2 + 6 H2O. तो 6 जो CO2 है वो CO2 का हो गया, 6 H2 है वो H2 का हो गया. तो जस्ट आई एम यहाँ पे अभी जो हमने लिखा था पहले कि दैट वन इज द K that is product 1, product 2, A, C, D, reactant 1, reactant 2, A, B, C, D. That A, B, C, D represents the molar value. ठीक है? बट इट इज नॉट आस्क्ड कॉमनली. ऐसा क्वेश्चन कॉमनली यहाँ से नहीं आता है. वो आता तो इंजामेटिक्स में आता है. जब इंजामेटिक कनेक्ट्स बताएंगे फिर वहां पे क्लियर होगा. तो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम अभी आपके सामने बतला दे रहे हैं. हियर द pH इज 0. pH क्या है? 0 है. अदरवाइज pH 0 दैट मीन्स द H प्लस is 1 m. Another way it is the 1 m. And that 1 m or at the pH 0, it represents the value of delta G 0. Standard free energy. Standard gives free energy. Standard free gives free energy. That is -1 3 6 4 in 1.75 into -5. This one. That is -1. -1364 multiplied -4.76. That is 6492. 0.64. नहीं रहने दो ना, काय के लिए माथा खराब कर रहे हैं. 6492. That is the calorie mole per mole. Calorie per mole. Then here this one is the sign is positive. Here the sign is positive. That means it represents the right to left. It represents the movement from reaction from right to left. Right to. Second one, when the pH is increased up to the 5. Here the pH is increased up to the 5. That means D0 naught, that is D0 plus RT, or it is not right to write here RT, direct I am writing here. One 1364 log H
plus log H plus, that is G naught plus 1364 10 minus 5. 10 minus 5. That is here, that is value of the G0 is here 6492. 6492 plus 1364 1364 multiplied by minus 5. Multiplied by minus 5. Then what is the value of 1364 multiplied by minus 5? 6492. What is the value? 6825. 68. Sir, 1364 होगा ना? 20 6820. 6820. Then what is the value? Minus 328. 328. 28. Then the reaction is from Left to right. reactant to product, left to right. This one your solution. And anyone is asked, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तीनों पूछा जा सकता है. This one is the first. Okay. यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द डेल्टा जी, मतलब चेंज ऑफ एनर्जी, दैट इज द फ्री एनर्जी. ठीक है. फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी. एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है कितने पीएच पे हो रहा है? पीएच 7 पे. मतलब दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू. बायोलॉजिकल सिस्टम में हम 7 पीएच को ही मानते हैं. तो यहाँ पे हमको D0 फ्री जीरो का कोई आवश्यकता नहीं है. और अगर D0 है तो जो इसका स्टैंडर्ड D0 है वो हम कंसीडर करते हैं. ठीक है. And the D0 of the ATP because it is a regular oxidative process. अभी हम बोल रहे हैं कि it is responsible for the coupling of the reactions. Then the D0 is 7700. इसको याद रखिएगा. That is the D0 of ATP. D0 of ATP ये फिक्स्ड है. किसमें? इन टर्म ऑफ किलो कैलोरी पर मोल. सॉरी, कैलोरी पर मोल. किलो कैलोरी होगा तो यहाँ पे डॉट हो जाएगा. कैलोरी पर मोल. कैलोरी पर मोल. इसको याद रखिए. कुछ कभी भी एटीपी पे क्वेश्चन है, इसको याद रखिए. दैट मीन्स हियर दैट इज द वैल्यू ऑफ G0 minus 7700. Then RT plus, वहां पे क्लियर है, 1364. 1364 ये फिक्स्ड है. यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि इसका टेम्परेचर कोई चेंज नहीं करेगा. ठीक है. नाउ द इन भी लिख सकते हैं, लॉग भी लिख सकते हैं. दैट इज अ नेचुरल लॉग. इन मतलब ln इसको यूज करेगा तो ln पढ़ते हैं. ऐसे इट इज द नेचुरल लॉग. देन द वैल्यू इज हियर, द रिएक्शन इज ATP ADP plus PI. This is the product. This is the reactant.
ADP multiplied PI ATP. Clear? Now minus 7,700 plus 1364 in or log, natural log, that is ADP Minus 10 minus 4. Oh, इसको क्या हुआ? Minus 2 divided by 10 minus 3. That is minus 7700 plus 1364 in here minus 4 and minus 2, that is 6, and minus 3. That means here the 10 minus 3. That is minus 7700 plus 1364, that is minus 3. That is minus 7700, that is minus 4092 minus 11814. It is the value of DG0. Clear? Okay. Here the value is 11 792 calorie per mole. अरे यहाँ पर ये क्लियर है. सबसे पहले ये रेट ऑफ रिएक्शन बतला रहा है. इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज द रेशियो. द रेशियो इज रिप्रेजेंटेड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K equation, K equilibrium, that is the K equilibrium represented the 0.0475 here. And if it is not mentioned, then you calculate the value by the ratio of the molar concentration of the product to reactants. In that condition, in question, the values of the product and reactants are mentioned directly at the equilibrium level or in the form of the ratio. या तो वो रेशियो का फॉर्म में देगा, मतलब परसेंटेज कन्वर्जन के फॉर्म में देगा, या उसके नेचर के फॉर्म में देगा. देन यू कैलकुलेट द differences at the equilibrium level, minus RT log 0.0475, that is the minus 1804. It is represented the value of the D0, matlab change at energy at the equilibrium level. Now you calculate the system change, that is the delta G naught dash, or either you represent direct the delta G whatsoever. Then G naught plus RT log molar concentration of product divided by the molar concentration of the reactants. In this condition, the value of the D0 is minus 1804, that is minus 1804. And this one, the RT constant is converted into 1364. The molar concentration of the product is presented as the 10 power minus 6, and molar concentration of the reactant is presented in the form of the molar concentration of the 10 minus 4. That means minus 1804 plus 1364 multiplied by log value of the minus 2. Log value of the minus 2 is converted into the minus 2. This value is the minus 1804 and minus 2728, that is minus 532 calorie per mole. It is the value of the change of the energy in this reaction. Clear?